be more appropriately provided in the substantial part of the matter. On 12 October 1949, Sardar Patel declared in the substantial that the new constitution was passed and alliance between by the Assembly on October 17, 1949, the object of putting the Bengal law, the object the President of the Assembly explained, was to see that it was in conformity with this Constitution. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप पेम्बल को रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो हमारा पेम्बल ट्रू सेंस में पेम्बल है। Various amendments were at this stage suggested but it was rejected. One of these proposals was to insert into the word in the name of God. पेम्बल में एक ऐसी सेंस है कि पाकिस्तान में the name of Allah है, तो यहाँ भी the name of God होना चाहिए, but that was rejected on the ground. It was inconsistent with the freedom of faith, which was not only promised in the preamble itself, but was also guaranteed as a fundamental right. अगर हम हिंदी गेम ऑफ गॉड करते हैं तो पता लगता है कि इसे एक समुदाय के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए है, रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी रिलीजन हो। An amendment was moved in the Constitutional Assembly to make it clear beyond all doubt that sovereignty vested in the people. It was not accepted on the short ground that preamble as drafted could convey no other meaning than the Constitution emanated from the people and sovereignty to make this Constitution vested in them. So ये कुछ चीजें थी preamble के बारे में जो मैंने सोचा कि आज के मौके पे आपसे शेयर की जाए। एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, तैयार होने के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी जो स्पीच का एक पोर्शन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनका क्या नजरिया था। जो पहली स्पीच में उन्होंने पहले बात बताया कि क्या उसका एक पोर्शन है, सर मैं वो पढ़ के सर सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, we have prepared a democratic constitution, but successful working of democratic institution requires in those who have to work them willingness to respect the viewpoint of others, capacity for compromise and accommodation. Many things which cannot be written in a constitution are done by conventions. Let me hope we shall show those capacity and work those conventions. The way in which we have been